Okay, so the Kaggle competition is finally live, Financial Data Analytics Challenge, and you guys have like 18 days to complete this challenge. So I'll start from the coding part. So basically, because you have to submit the submit a file. तो मैं shortly बताऊंगा कि उस फाइल में exactly होगा क्या, but before that, when you so it's a private challenge, so जो link मैंने वहाँ पे provide किया है in the instructions document, open that link और वहाँ से I think तुम लोग जिसका Kaggle register नहीं हुआ, first of all वो register करेंगे and then join the competition by the name of Financial Data Analytics Challenge 1.0. To join the competition, and then it will allow you to submit your findings in the form of CSV, right? तो ये इसका पूरा प्रोसेस होगा. मैं आप लोगों को वैसे डेमो भी दिखा दूंगा कि हाउ एग्जैक्टली you're going to submit the file, but before that ये देख लेते हैं कि सबमिशन फाइल बनेगा कैसे. I use VS Code, but I guess आप लोग गूगल क्लाब यूज कर रहे होगे, या आप इट्स लाइक फ्री जुपिटर नोटबुक यूज करना है, वीएस कोड किसी को आता है तो वो यूज कर ले, किसी को गूगल क्लाब करना है तो वो यूज कर ले, बट आई यूज वीएस कोड एंड आई प्रेफर दैट. So you start from the importing the libraries, of course, and then I send two data files in the group, right? The training set और test set. और ये exactly उसी पे ही मैंने like trial और error किया था before गोइंग लाइव द कंपटीशन. तो उसमें ट्रेनिंग सेट है, टेस्टिंग सेट है. ट्रेनिंग सेट में अराउंड 2 लाख एंट्रीज हैं along with the variable. Variable उसमें given है because that's the data set upon which your algorithm will be learning the patterns, right? And then you have the test set जिस पे आप लोग उसको टेस्ट करोगे, because अब इस टेस्ट सेट में there are no variable, there are no dependent variable given. ठीक है, टारगेट वेरिएबल गिवन नहीं है, एंड इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. लाइक इट्स ईदर it's a certain financial condition that I kept anonymous, because usually students found out the original data set और बस उसी को वो कॉपी कर देते हैं. तो उससे उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए I kept it anonymous. तो usually आप लोग जितने भी classification के algorithm है, I listed down in the instructions document, so you can go through that. And I think the sir will be covering most of the algorithms in the next class or the next class. So I kept the deadline, like I kept the like I'm planning to keep it online live, the competition, for next 18 to 20 days, right? So you will have a lot of time to learn and practice. So you load the data, और जो भी क्लास में आप लोगों ने फीचर इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ा, मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करते हैं, वो सारा कुछ. Of course, you will be using ChatGPT. ChatGPT is totally allowed to write the code, but not the report. Report तो नहीं है, PowerPoint रखे है सर according to instructions. और इसमें मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छा यूज किया. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप लोगों का जो मैट्रिक है, एवेल्युएशन मैट्रिक है, वो आरओसी एयूसी कर्व है, राइट? आप लोगों ने F1 स्कोर पढ़ा था, प्रिसिजन पढ़ा था, रिकॉल पढ़ा था, एक्यूरेसी पढ़ा था. तो इन्हीं को यूज करके एक आरओसी कर्व भी बनता है. आई थिंक तुम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट की क्लासेस में ये कवर किया होगा. एंड जस्ट राइट अ प्रॉम्प्ट के आरओसी कर्व पे हम एवेल्युएट कर रहे हैं, तो वट एवर द सबमिशन फाइल द कोड इज गोइंग टू जनरेट फॉर यू, उसमें बस ये इंस्ट्रक्शन दे देना कि द फाइल मस्ट हैव द लाइक मस्ट फॉलो द आरओसी गाइडलाइंस, राइट? तो वो खुद ब खुद उसको सेट कर देगा. अगर आरओसी कर्व पे नहीं होगा तो आई गेस या तो केगल को एक्सेप्ट नहीं करेगा आप लोगों की सबमिशन, या फिर आप लोगों की जो एक्यूरेसी है लीडर बोर्ड पे वो जीरो जीरो आ रही होगी. तो दैट्स अ प्रॉब्लम, ये फिर आप लोगों को इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो बस इसको फीचर इंजीनियरिंग करने के बाद आई अप्लाइड द लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन द आई ट्रेन्ड using a logistic regression on the training set, and then after training I fit it on the test set. तो जब मैं फिट करूंगा उस पे, तो मेरे पास एक सबमिशन फाइल आ जाएगी बाय द नेम ऑफ, मैंने यहाँ पे नाम लिखा होगा, यस, एक सेकेंड, यहाँ पे ये दिस इज द नेम ऑफ द फाइल. तो इस FDA1 के नाम से मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में यहाँ पे आप लोग आई गेस आगे देख सकते हो. तो यहाँ पे एक डाउनलोड्स के अंदर मेरे पास FDA1 के नाम से एक फाइल सेव हो जाएगी, तो वो मैं जाके वहाँ पे सबमिट कर दूंगा. तो आई प्रेफर के मेक अ फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप, उसमें अपनी ट्रेनिंग सेट, टेस्ट सेट और सबमिशंस भी उसी में,
आप लोग सेव करते रहना, और लाइक हर सबमिशन का नाम अकॉर्डिंग टू वट एवर एल्गोरिदम यू आर यूजिंग वो चेंज कर देना। यहाँ से लाइक सिंपली जो थर्ड लास्ट लाइन है कोड की, वहां पे डाउनलोड्स तक उसका पाथ है, उसके बाद सबमिशन का नेम। तो आप सबमिशन का नेम बस उसको ट्विक करते रहना, लाइक 1.0 1.0, लाइक 1.0 1.1 1.2 इस तरह, सो एन। और इसमें यू कैन इवन मेंशन द एल्गोरिदम नेम, सो व्हाटएवर यू आर इजी विद। तो ये कर लेना एंड देन यू जस्ट सबमिट द फाइल ऑन द केगल। आई थिंक इसमें तो इतना कोई खास नहीं है। आरओसी कर्व का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और जो मैं आप लोगों को मैंने सबमिशन एक फाइल दी है, सैम्पल सबमिशन फाइल, उसमें मैंने पूरे वाई को जीरो कर दिया, बट आपके केस में वो प्रोबेबिलिटीज होंगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज विल बी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, 0.5, 0.6, 0.001 भी हो सकता है, वट एवर द वैल्यू इज, तो वो बेसिकली प्रोबेबिलिटीज होंगी, राइट? So once you have the submission file saved at whatever location or path you given to the, like you instructed to the chat GPT or in the code, तो वहां पे जाके आप लोगों की सबमिशन फाइल सेव हो जाएगी एंड कम बैक टू द कंपटीशन। यहाँ पे अगर मैं इसको, अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने इसको कुछ कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, वो आपने आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, नाउ यू हैव privilege to submit the prediction file, right? So if you click the prediction file, browse files, और उसको रन करने के बाद, अब यहाँ पे मैंने क्योंकि डाउनलोड्स का दिया था, तो इट्स इन माय डाउनलोड्स FDA 1 एंड FDA 2। FDA 1 पे मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया था, और FDA 2 पे मैंने आई यूज्ड अनदर algorithm, right? So once I click the FDA 1 and open it, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोग कुछ लिख दो, लाइक वट एवर ट्विक्स यू मे मेक, लाइक अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फर्स्ट में रखते हो तो यू माइट यूज for example, mean as a solution for the missing values. But in the next iteration, you might be using the mode, right? So ये छोटी छोटी tweaks करके, and you will look for the accuracy, right? At every tweak you make, you will observe a change in the accuracy, right? और accuracy आपको exactly पता चलेगी when you submit it। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा process होगा। fda1.csv ये मैंने यहाँ पे submit कर दिए, and then you will have your accuracy score. It might take a minute or two, like few seconds. Yes. So the accuracy is 0.84. So next time I used KNN imputer, you will be trying missing like you will be dealing with the missing values by using most frequent value, even dropping the values. तो ये like process है जो आपने during these 18 days आप लोग कर रहे होगे, ठीक है? And then you will have a leaderboard where you can see where you stand and where your class fellows stand. It's not necessary to be on the top, like top 5 10 में आने की जरूरत नहीं है, but it depends कि आप कितने consistent थे, how many submissions did you make, and your experimentation with different algorithms. So it's a great opportunity to learn, of course, right? So I guess this is all about the competition, and I might be missing on something, but I think I covered everything well. Yeah. So if there's any question regarding the competition, if you're stuck anywhere, just like text me on the group, or maybe on my like DM me। तो उसका लाइक जो मैं आंसर है इधर रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, या फिर आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा। आई थिंक इससे ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। तो या, थैंक यू।